Good morning, student. So, today we are going to study the important interesting fact. Let us start from you have to look out the pictures which I given here. First is the plant. Which plant are there? The plant which having the spines on their body. Okay, spines. What is the function of that spines? They protect from the other enemies who disturb them or who kill them. Okay, so these are the defense organ of their body to defense from the others. Same things or other things like snakes, then nares, scorpions, spider, and the snake. They are having the poisonous glands in their body. On the basis of that, they can protect from the other animals. Like these, uh, that human also have something which they protect from the others, like microorganism or other foreign particles which do not get enter into the human body. So is there anything which protect human from the others like foreign particles or microorganisms? So yes, there is something. What? So immune system. Our immune system is very important part of our body. So what is the immune system? So immune system is made up of organ, tissue, cells and the molecules. They all work together and generate an immune response. Immune response for what? To protect us from the microorganisms. जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंट्री की होगी, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का, रिमूव दैट टॉक्सिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्रिएट किया है बॉडी में, वो सब डिस्ट्रॉय करने का काम इम्यून सिस्टम करती है. सो एक्चुअली वो क्या करती है? You just remember that human system is made up of organ, tissue, cells, molecules. They all combinedly work together for what? To immune response, to generate the immune response. For what? To protect the from to protect us from microorganism, because microorganism secrete the toxics, so that immune system remove that toxic and destroy them. Okay, so immune system, what they do, they identify that microorganism or that foreign particle, then recognize that, then neutralize whatever the toxic material or substances that microorganisms secrete in our body, so that that immune system get neutralize that, then destroy that foreign substances, then lastly eliminate that pathogen. The pathogen, it may be the bacteria, viruses, fungi or anything else which act as a or which damage to our body. And last is the remember. Remember is very important thing, like a memory. If any microorganism enter into our body at first time, so our immune system has little more time to identify that microorganism. But same microorganism enter in next time, again at that time immune system, when that microorganism enter into our body, that immune system attack them and kill them. Don't get any identification here, because the immune system has the memory to memorize that microorganism come in a last time also. So इम्यून सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है कि जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में गए तो उसे याद रखता है और नेक्स्ट टाइम वो आते ही एंट्री करते ही उसे किल कर देता है इफ़ इट इज़ अफेक्ट ऑन आवर बॉडी. ओके, और वो रिएक्शन प्रोलॉन्ग होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रिएक्शन होता है. सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज एन फैक्ट, फ्रीडम और exempt that Edward Jenner in England, he develops cowpox vaccine. He develops cowpox vaccine for the protection against the attack of smallpox. Smallpox is the virus like. So smallpox, chickenpox is the disease in which the small pimples or rounded pimples like structure found not only the face, all over the body. It is a smallpox or that chickenpox. And on the that disease having the vaccination first time given by that Edward and Jenner. Okay, that immunology. What is the meaning of immunology? It is the branch of science which deals with the study of immune system, immune responses to the foreign substances, and their real role is the resisting infection. Okay, so study of structure and function of that immune system is called as the basic immune
system. The most important characters of human system is immune system can be differentiated between self and non-self. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ मीन्स कि जो बॉडी की सेल्स है उसे वो आइडेंटिफाई करती है, एंड नॉन सेल्स को भी। नॉन सेल्फ मीन्स कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। वी नो दैट इम्यून सिस्टम कैन किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगर इम्यून सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दैट कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल या ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इंस्टेड ऑफ उसने अगर हमारी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो सो इसलिए दैट इम्यून सिस्टम कैन बी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ, अपनी बॉडी की सेल्स, एंड नॉन सेल्फ, फॉरेनर बॉडी की मॉलिक्यूल्स और द सेल्स और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Okay, so what is the most important character of immune system? It can differentiate between self and non-self. One more thing is there, it possesses immunological memory. As I told you, immunological memory, that कि वो एक बार किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बॉडी में एंटर की होगी तो उसे वो याद रखता है, नेक्स्ट टाइम वो किल इट एज सुन एज पॉसिबल. ओके, सो इट इज़ द मेमोरी. जैसे कि हमने बोला था उसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल उसे मराठी में बोलते कि कांजने ये एक बार हो गया, जैसे कि ये स्मॉल पॉक्स है कि देवी रोग बोलते थे उसे उस टाइम में. तो कांजने भी एक ऐसे ही डिजीज़ था कि उसमें बॉडी में बहुत सारे पिंपल्स जैसे आ जाते थे. नंबर ऑफ पिंपल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द होल बॉडी. बट वो डिसीज़ लाइफ में सिर्फ एक बार ही होती, नेक्स्ट बार होती नहीं. एंड द डिजीज़ वॉज द कॉन्टेजिनियस, वो स्प्रेड जल्दी से हो जाती है. सो एट दैट टाइम इम्यून सिस्टम कैन आइडेंटिफाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर वो कांजने हो गई हो तो वो नेक्स्ट टाइम आपको अगर आप इन्फेक्टेड हुए तो भी आपको वो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम उस डिजीज़ को, उसके पैरासाइट को याद रखा है. उसके लिए जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाई थी वो स्टिल वही है. ओके, सो दिस इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कि वो याद रखती कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया था और उसके लिए हमने कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाई थी. सो एंटीजन इज द एनी फॉरेन सब्सटेंसेस इन्वेडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज एन एंटीजन. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, that microorganism have the antigen. Each and every microorganism having that antigen. When that antigen enter into our body, so the antigen when enter our body at that time, the immune system secretes the antibodies for that antigen. Means antigen is from foreign organisms or foreign particles, and antibodies are found or formed within our bodies at a specific antigen. स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं. एंटीजन फॉरेन पार्टिकल और फॉरेन सब्सटेंसेस के पास होता है और एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. ओके, एंटीजन्स आर सब्सटेंसेस which are usually proteins. These are usually proteins and they are present on the surface of cells like viruses, fungi and bacteria. जिनके ये जो पैथोजेंस हैं, वायरस, फंजा, बैक्टीरिया, उनके सरफेस पे वो एंटीजेंस होते हैं. व्हेन दैट एंटीजन और दैट वायरस एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एंटीजन आर केम इनसाइड, and when our body identify that antigen to produce the antibodies. So what is antibodies? The protective chemicals produced by immune cells in response to antigens are called as the antibodies. That antibodies are specialized. Why specialized? क्योंकि each and every antigen having the antibodies, हर एक फॉरेन सब्सटेंसेस के पास एंटीजन होता है. वही एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए ईच सेपरेट एंटीबॉडीज़ होती है. एक एंटीबॉडीज़ ऑल द फॉरेन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती. ओके, सो इट इज़ अ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड. इट इज़ अ वाई शेप्ड प्रोटीन. हम इसकी स्टडी बाद में भी करने वाले हैं. सो एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है वाई शेप होता है
and which having the lock and key like structure. जो वाई शेप होता है जो कि एंटीबॉडीज होती है उसमें अगर एंटीजन आ गया तो इट गेट लॉक की एंड लॉक लाइक स्ट्रक्चर. ओके, so this is they are the key and lock to the body for an invader, whether they are virus, bacteria or fungi or parasites. Immune system is the complex system which include cellular and molecular compound which provide defense against infectious agents. Okay, so immune system is a complex system है क्योंकि वो include करती है कि cellular molecular components और which provides the defense against that infections. Here is the immunity. Our immunity having two different types: innate, inborn, inherited, or the acquired adaptive specific immunity. So innate immunity जो immunity हमारे में at the birth है, पैदा होते ही हमारे पास जो कोई इम्यूनिटी पावर है उसे बोलते हैं innate. Innate is also called as the inborn, inherited immunity. और अदर है कि acquired जो कि हमने जो हमें बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मिली है इम्यूनिटी उसे बोलते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और जो हमने सीखी सीखने के बाद हमको वो इम्यूनिटी पावर मिली है, दैट्स इट इज़ कॉल्ड एज द एक्वायर्ड. दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैविंग द टू टाइप्स, एक्टिव, पैसिव. Active also having the two types, natural, artificial. In passive also natural, artificial, acquired, passive and acquired active immunities are there. We will discuss this step by step. So let us see first innate or inborn or inherited immunity. So first is the innate or inborn or inherited immunity. As I told you, it is the inborn. पैदा होते ही बच्चे में जो इम्यूनिटी होती है और पावर होती है उसे बोलते हैं कि इननेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल इम्यूनिटी. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. कोई स्पेसिफिक डिफेंस करने के लिए नहीं है वो. दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. इट कंप्रोमाइज वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स. कुछ बैरियर्स है कि बिकॉज ऑफ दैट वी गेट दैट इम्यूनिटी एंड विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ दैट फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी. पहला है एपिथेलियल सरफेस, उसे हम फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बैरियर भी कह सकते हैं. एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन द ब्लड एंड टिश्यूज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटोकाइनिन बैरियर. एंड द नेक्स्ट इज द सेलुलर फैक्टर इन द इननेट इम्यूनिटी which is also called as the cellular barrier. Then fever and the last one is acute phase protein. Okay, so let us see first epithelial surface. These are the epithelial surface. पहला देख सकते हैं जैसे कि eyes. Whenever any foreign particles enter into our eyes, what happen? The tears are come out. आंसू निकल आते हैं आंखों से. The tears having the chemical which inhibit the bacterial growth. वो बैक्टीरियल की ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है. सो टीयर हैविंग द केमिकल विच इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ. नेक्स्ट इज द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी which is in the nose. Okay, so nose having the number of hairs are there. Mucus trap is there. For what? If any microorganism come into our nose, so at that time we get sneeze. हमें शिंक आती है, उसकी वजह से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट थ्रू आउट द बॉडी. ओके, सो नेजल कैविटी इज द एपिथेलियल सरफेस. देन स्किन. Our skin is very important because sweat gland is present on our skin. Sweat having the sodium chloride concentration, and that concentration is kill the microorganism enter into the body. So skin is very important. Then urethra is the urine flow prevent the bacterial growth. Then anus, mucous membrane traps microorganisms. Then mouth cavity. That mouth cavity having the buccal cavity. That buccal cavity contains the saliva, that sticky watery substances present in our buccal cavity. When we chew any or when we eat the food, at that time the saliva kills the microorganism present in the food and push forward towards the stomach. In the stomach there is the hydrochloric acid, that is the acidic juice. Whatever the microorganism present still in the buccal cavity, they are destroyed in the stomach because of that acidic juice. Okay, so these are
Also the important thing, that is the epithelial surface of that stomach. Then the trachea and bronchi. If the any microorganism enter into our trachea or bronchi, at that time we get the cough, हमें खांसी आ जाती है, खांसी की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर फेंक दिया जाता है. ओके, सो ट्रैकिया एंड ब्रोंकिस आर इम्पोर्टेंट. लास्ट इज द वजाइना, दैट इज द एसिडिक secretion inhibits the growth of that pathogens. So these are the different epithelial surfaces in the innate immunity. Next is the antimicrobial substances in the blood and tissues. In blood, there is a number of, that is a 13 serum proteins circulated in the blood. Okay, and these are in inactive state. So these the presence of that microbial pathogens activate the complement cascade to eliminate the pathogen. In our cells, there is presence of interferon, which is belongs to the class of cytokinin. What is the function of that interferon? Interferon are protect from non-infected cells from the further viral infection. आप यहाँ देख सकते हैं एक सेल है, उस सेल में अगर वायरस ने अफेक्ट किया, if the viruses are affect to that cell, so that cell having the interferon, and that cell spread or send that interferon to the nearer cells to inform that I'm going to infect with that virus, so you get alert. So all these cells get alert and do not enter into, or that virus does not get enter into that cells. So interferon is very important, which are present in the cells, which inform that other cells, or gives the signals to the neighboring cells that it goes apoptosis in stage. Okay, so this is called as the antimicrobial substance in the blood and tissues. Then cellular factor in the innate immunity. That cellular factor in that phagocytosis is very important. Phagocytosis means the large particle or the large foreign particles are get destroyed or killed or goes out, removed from the body, from the bodies. Okay, it is called as the phagocytosis. Most of the cells in WBCs, you are already studying circulation that WBCs, white blood cells, having the different types of cells like neutrophils, then basophils, then monocytes. So these are the cells which are kill that microorganism and remove from the body. So there is the class of lymphocytes called as the natural killer. It is a non-specific defense agent, viral infection and tumors. So as I told you that certain types of leukocytes, that is the WBCs, are there which act as the phagocytosis. ये यहाँ पर देखिए, phagocytosis में जो रेड कलर का है वो है फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, and we have to kill that microorganism or remove that microorganism from our body. So what should we do, or what should WBCs do? They just engulf them and remove from our body. Okay, so this is called as the cellular factor in innate immunity. Next is the fever. Increase in the body temperature following the infection is natural defense mechanism. हमने किसमें देखा था कि yes, in malaria we saw in malaria that RBCs get rupture and release the chemical. That chemical is increase our body temperature and which cause the fever. So fever is very important to killing the microorganism. It also helps to increase the physiological processes, and because of that increasing in physiological processes, they destroy the invading pathogens. Fever stimulate the production of interferon. अभी हमने देखा था कि इंटरफेरॉन सेल्स में होते हैं. सो तो इंटरफेरॉन की नंबर्स इंक्रीज करने के लिए फीवर इज इम्पॉर्टेंट. और इंटरफेरॉन क्या करते हैं, विच हेल्प्स टू recovery from the viral infection. Okay, last is the acute phase protein, that is APPS. Infection on injury leads to the sudden increase in concentration of certain plasma proteins. इन्फेक्शन ऑन इंजुरी, अगर आपको कुछ इंजुरी हुई है तो इंजुरी पे इन्फेक्शन ना हो इसलिए हमारी इम्यून सिस्टम सडन प्लाज्मा प्रोटीन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देती है, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज APP.
that is the acute phase protein. Okay, so it is called as acute phase protein, and these includes C-reactive proteins, then C-reactive protein, that is CRP, manus binding proteins, alpha 1 acid glycoprotein, serum, amyloid P, etc. APPs are believed to enhance host resistance, which prevent the tissue injury and promote repair of inflammatory lesions. Means वो APPS means acute phase protein का फंक्शन क्या है, which prevent the tissue injury. जो tissue injury हुई है वो और नहीं बढ़नी चाहिए, उसे और बढ़ाता नहीं है, और जो इन्फ्लेमेशन और जो पेन कुछ है उसको रिपेयर करने का काम वो APPS करता है. इट इज़ एक्यूट फेज प्रोटीन. ओके, सो दीज आर ऑल द different carriers in the innate immunity.